हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू CivTech Simplified। दिस इंजीनियर इमरान अजीज। मैं आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इरिगेशन इंजीनियरिंग पार्ट 4 की, जिसमें हम फर्दर 10 क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करेंगे। ये क्वेश्चन गेट एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए तैयार किए गए हैं और डेफिनेटली इंजीनियर्स को हेल्प आउट करेंगे। इन वीडियोस को लाइक करें, इनको मुकम्मल एंड तक देखिए, अपनी कम्युनिटी में शेयर करें और हमारे चैनल CivTech Simplified को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल पे पब्लिक प्रोक्योरमेंट के रिलेटेड डिफरेंट रूल्स लाइक फेडरल पेपर रूल्स और खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी रूल्स भी डिस्कस किए जा रहे हैं। सो उन वीडियोस को भी मुकम्मल देखिए और पब्लिक प्रोक्योरमेंट के हवाले से अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करें। सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन, जहां पे एक प्रेजेंटेशन के थ्रू फर्दर ये 10 MCQs आपके साथ शेयर कर। इरिगेशन इंजीनियरिंग SSC JE MCQs पार्ट 4 में आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 to 40। इसमें क्वेश्चन नंबर 31 says that the duty of irrigation water will be less if option A, area irrigated is more, option B, water supply required is less, option C, water supply required is more, option D, none of these. Duty of irrigation water will be less if the water supply required is more. C is the correct option. The area in which crop is grown at a particular time or crop season is called option A, gross command area, option B, cultivable commanded area, option C, cultivable uncultivated area, option D, none of these. So area in which crop is grown at a particular time or crop season is called cultivable commanded area. So B is the correct option. 33. The first watering before sowing the crop is known as option A, core watering, option B, paleo, option C, delta, and option D, none of these. So B is the correct option, which is paleo. 34. The first watering when the crop has grown a few centimeters is called paleo. Option A, agree, option B is disagree, option D, all of these. So disagree is the correct answer. 35. The crops require maximum water during option A, first watering before sowing the crops, option B, last watering before harvesting, option C, first watering when the crop has grown a few centimeters, option D, all of these. Crop require maximum water during first watering when the crop has grown up for a few centimeters. So crop जब भी थोड़ी बड़ी हो जाती है फ्यू सेंटीमीटर्स में, तो उसको पानी की डेफिनेटली रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, क्योंकि उसने अपनी खुराक भी पैदा करनी है और अपनी ग्रोथ भी करनी है। So C is the correct option. The maximum depth in soil strata in which the crop spreads its root system and derives water from the soil is called option A, core water, option B, root zone depth, option C, delta, and option D, overlap belongs. So B is the correct option. The maximum depth in soil strata in which the crop spreads its root system and derives water from the soil is called root zone depth. B is the correct answer. 37. The depth of root zone is 90 centimeter for option A, wheat, option B, sugarcane, option C, rice, option D, cotton. So C is the correct option. The depth of root zone is normally 90 centimeter for rice. 38. The duty at outlet is called capacity factor. Option A is correct, option B is incorrect. So B is the correct option. The duty at outlet is called capacity factor. 39. The duty of a crop is 432 hectare per cubic when the base period of crop is 100 days. The delta of the crop will be option A 100, option B 200, option C 430, option D 864. So it will be 200. B is the correct option. Question number 40. The average delta of rice crop is nearly option A 30 centimeter, option B 60 centimeter, option C 120 centimeter, and option D 150 centimeter. Average delta for rice crop is nearly 120 centimeters. C is the correct answer for this question. So friends, this was part 4 of our ongoing video series on irrigation engineering multiple choice questions for SSC JE exam. I hope आपने वीडियो को लाइक किया होगा। इस वीडियो को जरूर शेयर करें और इन वीडियोस को एंड तक देखें, ताकि आपकी गेट एग्जाम के लिए या SSC JE एग्जाम और एनी सॉर्ट ऑफ जॉब इंटरव्यू और टेस्ट के लिए प्रिपरेशन हो सके। सो लेट्स मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो, जहां पे फर्दर 10 MCQs आपके साथ शेयर करेंगे। टिल देन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।